guys, welcome back to my channel. I am Daiva Rastogi and this video marks the beginning of a new series that is Mahi's Library, where I will share my learnings from the books which I have read so far. And the first one is Compound Effect. So let's start off. You know what? ये बुक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना सिखाती है. मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा मसाला ऐड करना है या यूँ कहूँ कि लाइफ को अपने दम पर जीना है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा. आपको बहुत ही सारी इंसाइटफुल चीज़ों के बारे में पता चलेगा एंड वीडियो के आखिर में एक असेसमेंट भी आपका इंतजार कर रहा है. सो स्टिक टिल द एंड. एक बहुत ही फेमस कहावत है जो सबने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे. यू रीप व्हाट यू सो. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट आउट ऑफ लाइफ व्हाट यू आर नॉट विलिंग टू पुट इनटू. मतलब कभी सोचा है कि इस हिसाब से हम अपनी लाइफ में क्या इनपुट डाल रहे हैं और क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या उस हिसाब से इनपुट डाल रहे हैं. आइए इस बात पर चर्चा करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर फर्स्ट पॉइंट, चॉइस. Very important thing in our life. The choices we make today are gonna define our life, our destiny, everything. And Darren Hardy says that small and smart choices plus consistency plus time results into a radical difference. Let's understand that what does he means from that with the help of the world famous Buffett example. So you have two choices, okay? First one is आप अभी के अभी 10 करोड़ ले लो और ऑप्शन 2 इज आप 1 रुपया अभी लो पर वो 1 रुपया अगले 30 दिनों तक अपनी पिछली वैल्यू का डबल अप होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आज 1 रुपी है तो कल 2 और परसों 4 और उसके अगले दिन 8 रुपीज होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट विल कीप गोइंग. बट हड़बड़ी में और पैसे कमाने के स्टार्टिंग में what choice will make? So pause this video for a bit and comment below that what choice will you make? To take 10 crore at once or to take 1 rupee at a time which is gonna double up its previous amount for the next 30 days? कमेंट करने का टाइम है ये, कमेंट करो जल्दी. ओके सो मूविंग ऑन, लेट्स सी कि कौन जीतता है इस रेस में, रुपी 1 या रुपी 10 करोड़. सो डे 1 ऑप्शन 1 10 करोड़ स्टिल स्ट्रॉन्ग. ऑप्शन 2 रुपी 1, राइट. लेट्स कम ऑन डे 10. ऑप्शन 1 10 करोड़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी. ऑप्शन 2 is at 1023. Okay, growing slowly. Let's come on day number 20. Option 1 10 crore. Option number 2 we are on 10,48,575 but still less than 10 crore. No problem. Let's come on day number 30. Option 1 still on 10 crore पर खर्चे तो होते ही है. But option number 2 we are at 1.07 billion, guys. You see the magic, right? Beauty of compound effect is in its simplicity. Check out this graph. Left side में आपको barely कुछ results दिखेंगे, but on the contrary, right side में massive growth है. This is the super power of compound effect. मतलब हमें patient होना होता है, but it grows exponentially. And patient होना is the most challenging aspect of compound effect. We have to let go of our microwave mentality. That is, कि success should be as fast as our fast food. I mean, come on, guys. It's just not possible. You get it, right? You should, allow yourself to breathe and promise yourself that you're not gonna expect a lottery winner success from yourself. Point number 2, taking responsibility. Hardy says you alone are responsible for what you do, don't do, or how you react to what's done to you. By taking this whole responsibility, we save a lot of time and mental stress. Suppose if you want to start something new, but आप ये complain कर रहे हो कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, तो ऐसे नहीं चलेगा. टाइम इसलिए नहीं मिलता because you don't look out for it enough. There's this saying that if you really want to do something, you will find a way. Otherwise, you will find an excuse. So, time to take up the responsibility and make a solid plan. Point number 3, how to get lucky.
some people are just lucky and that's why they are where they are. I used to feel the same until I came across this crazy formula for getting lucky. Yes, it's by Hardy sir. So the formula is preparation, that is your personal growth, attitude. Attitude, huh? What does he think of himself? No, not this attitude. I mean the correct mindset and belief and opportunity, good thing coming your way, and action. You doing something about it. That all of this combined results into your luck preparation, and you can call your luck on your doorstep. It's not the big things that add up in the end. It's the hundreds, thousands, millions of little things that separates the ordinary from the extraordinary. The question is, are you working on your little things? We can work on our little things by taking control and tracking it. I have talked in my video about habits that how can we track our goals and talked about journaling in it. I will leave a card over here or in the link in the description box. You can check it out and understand the importance of journaling and all. By tracking it, you make your goals visible to yourselves and actually start taking some action little by little, but every day. And every day is the most important factor here because, as I mentioned in the beginning, compound effect is all about being consistent. Point number 4, everything is possible. एक बहुत ही important fact that Hardy says is successful people जरूरी नहीं कि ज़्यादा talented हो किसी से, पर उनकी हैबिट्स उन्हें ऐसे डायरेक्शन में ले जाती है जहां वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और अवेयर होते हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ज़्यादा कम्पिटेंट होते हैं और बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं. इफ़ वी इवन टेक one work which we want to improve on, we can do so by enough practice and repetition. With repetition वो automatic हो जाता है हमारे behavior में. I have talked about this in my habits video as well. If we want to compensate for anything, we can do so by working damn hard. गलतियाँ कर कर के ही we become an expert. So yeah, everything is possible if only you want it enough to try damn hard. Point number 5, the why power. Says, forget about willpower, it's time for why power. Suppose आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, पर अगर आपको रीजन क्लियर ही नहीं है कि आपको ये क्यों करना है, तो चांसेस आर कि अगर आपको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगेगा तो आप उस चीज को ड्रॉप कर दोगे, आप करना बंद कर दोगे उस चीज को. Let's take an example, okay? एक घर है जहाँ आग लगी है एंड कोई आपको कहता है कि आप इस आग लगी घर में जाके सेफली निकल आओ तो आपको 10 करोड़ का इनाम मिलेगा. आप खुद सोचो, अब जाओगे उस घर में, आग लगे घर में, कमेंट करके बताओ कि जाओगे नहीं जाओगे. ओके, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सिचुएशन 2 इज, उस आग लगी घर में आपका कोई फैमिली मेंबर, भैया दीदी बहन भाई मम्मी पापा कोई भी फंसे हुए हैं. अब आप जाओगे उस घर में, अब तो आपको पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी आप जाओगे, है ना? आखिर क्यों? चीज तो सेम ही है, क्या बदला यहाँ? रीजन. एंड दैट वाज इज आवर वाई पावर. हमारे चॉइसेस मीनिंगफुल तभी होंगे जब हम उन चॉइसेस को अपने ड्रीम्स और डिजायर से कनेक्ट करें. We all should want something for ourselves and we should know that why we want it. Hardy says all the hows will be meaningless until your whys are powerful enough. You see, when the reason is big enough, you will be willing to perform almost anyhow. To truly ignite your creative potential and inner drive, you have to look beyond the motivation of monetary and material goals. Point number 6, who you have to become. You only see, experience and get what you look for. Success is something which you attract by the person you become. Your life boils down to this whole formula. You plus your life choices plus your habits and behaviors, when they are compounded, results into your life goals. Actions and behaviors, they never lie. Hardy says that if there is a difference between what you say and what you do, he will believe on what you do and not what you say. Action speaks louder than words, and हमारे actions ही ये define करेंगे कि हमें जिंदगी में क्या मिलेगा and who we become. Point number 7, Big Mo. Hardy introduces a very interesting character here and calls it Mr. Big Mo.
that is momentum. Actually, Big Mo is a very strong force for success. आप इसे देख या फील तो नहीं कर सकते, but you will definitely know when you have it. हाई स्कूल की फिजिक्स क्लास अगर आपको याद हो तो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था, एंड इट सेड दैट ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट unless and until acted upon by an external force, and objects in motion tend to stay in motion unless some external force stops their momentum. Hardy says it in another way: couch potatoes tend to remain couch potatoes. Ever wondered that why successful people tend to get more successful? The rich gets richer, the happy gets happier, the lucky gets luckier. They have got more. And when it rains, it pours. Darren Hardy. बहुत ही significant amount of energy लगती है इस inertia को तोड़कर कुछ नया करने के लिए, पर बस एक बार momentum पकड़ा गया तो रोकना मुश्किल होता है. You become unbeatable. And how exactly to build up Big Mo is: point number 1, make choices based on your goals and dreams, and also on your core values. Point number 2, putting those choices to work. Point number 3, repeating those healthy actions to establish a good habit. Point number 4, build a good routine. Point number 5, stay consistent. And damn, Big Mo is at your doorstep, and that's a good thing. You become unstoppable. Point number 8, do better than expected. One of the best ways to multiply our results is to see ourselves as our best competitor. हम किसी और से नहीं, खुद से compete करें और कल जितना अच्छा किया उससे 1% और अच्छा आज करें. My most favorite lesson from the book is: find the line of expectation and exceed it. Don't be just satisfied with enough, do more than enough. A little extra effort won't just improve but multiply your results. It needs a very little extra to be extraordinary. Darren Hardy. So this, my friends, sums up quite everything what I personally took out from this book. And अगर आपको ये मटेरियल कभी और भी रेफर करना हुआ तो वरी नॉट, आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स ऑफ दिस वीडियो फॉर यू गाइज, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड आप इस नोट्स को रेफर कर सकते हैं और इन लाइंस के अलॉन्ग ज़्यादा सोच सकते हैं. और साथ ही साथ एक असेसमेंट भी है जिससे आप खुद को असेस कर पाएंगे. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. और गाइज, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. So please whatever. और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका टेक अवे क्या था इस वीडियो से. That's it for today, guys. Take care and